Hi everyone. So I am in the third year MCA student of NIT Trichy. So my name is Mihir, and first of all, thank you for all of your support in the last NIMSET 2025 discussion video with AI Urban. भैया सेल्फ स्टडी के बारे में बता दो भैया 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सेल्फ कर रहा हूँ तो मुझे बता दो कैसे रिसोर्सेज को फॉलो किया जाए कौन सी बुक को फॉलो किया जाए एलआर के लिए कौन सी बुक ली जाए या कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक ली जाए मैथ्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए सो दिस वीडियो इज ऑल रिगार्डिंग दैट now I am giving you three type of things in this video. First, a basic structure you have to follow, a step-by-step path to crack the NIMSET examination. Second, what are the resources you have to take? Like free resources, I am going to tell you. Now, third, what are the key time management strategies you have to follow so that you can manage your time and prepare for the NIMSET examination. It is for both 2025 and 2026 aspirant. As the time is very less for 2025 aspirant, they should know the some of the key points of this video. This video is fully dedicated to those persons who want to crack NIMSET by themselves. So get started with this video. Now, I am telling you some things that are fact and figures. Okay. My classmate Aryan, he has a secured rank of AIR 4 in 2022 NIMSET examination. He has done a self preparation of around 3 months. He has secured a very good rank, all because of his analysis and the structure he has prepared for the route of NIMSET examination. The same structure I have taken from him and I am giving to you. Okay, starting with your basic concepts of maths. Okay, if you are good in 11th and 12th of your maths, then you have cleared all the basic concepts. Okay, but if you are weak in 11th and 12th, like you don't know about the sine theta's formula, you don't know about trigonometry's formula, you don't know sine 45, 40 sine formula, you don't know about vectors formulas, you don't know the basic concepts of complex numbers. First of all, you have to grab the knowledge of basic concepts of your maths. For that, you should follow the NCERT 11th and 12th. Without basic concepts, if you go for the solving the question, then it's a waste of time. So first is try to cover all basic concepts of maths. Second, at the preparing stage of your basic concepts, try to make one diary, short notes, okay, in which all the things, all the formulas you have written in a very short way so that you can revise daily. Okay. Now, third thing, if you are preparing by self, then you have to choose that type of questions. You have to choose that pattern of questions which are coming in NIMSET exams. There is a pattern of questions. We don't have to do all the questions on the NIMSET. We have to check the pattern. Check out the last 5 year PYQs and check the complex numbers and this type of pattern of question are there in the NIMSET examination. You took trigonometry, then check this type of question are there in NIMSET examination. So you have to observe that pattern. After observing analysis of that pattern, you have to pick out all those questions from your book. Now, let me tell you which book you have to prefer. Like, if you have cleared all the basic concepts and you are still on a average stage of maths, so then you have to take Arihant book. So Arihant is an average moderate level book because around 2022 examination, I have appeared for that. All the questions I have seen in that book. Okay, but if you say 2019 examination, which is very tough, so that type of questions are a JEE Mains level question. So JEE Mains level questions, you have to take the book of R.D. Sharma. R.D. Sharma is preferable for JEE Main type questions. Okay, so third of thing is that you have to observe last 5 year PYQs pattern and check the toughness level. Like 2019 is very tough question, tough paper. Then the drastically changing the pattern of this pattern and toughness level of that examination. So you have to analyze by yourself that thing. Okay. Fourth, the book I have given to you, like R.D. Sharma is for Gymnasts. If you have covered Arihant, then go for R.D. Sharma. In my perspective, self-scorer is also better. Arihant is some questions are there which is wrongly answered in the last of the Arihant. I have skipped that questions. If somehow you have some doubt in some questions, so you can check it out. One app called Doubtnet. Doubtnet app is the app I personally use. I click the photo of that question and I upload it on the Doubtnet. Then Doubtnet will give me solutions. So this is the 5 steps you must follow for making your NIMSET examination preparation better.
Now, coming to the resources. Resources. Like I have to give free resources because you are doing self preparation. So free resources for maths. For maths, you can check it out. Nishant Vohra on YouTube. Nishant Vohra and Samir Chinchal. These both are the best teachers of Khan Academy. They have a very good experience in maths and some subjects also of computer. So you can check it out their video. There are one short videos of all the syllabus of maths, and you can make short notes of that. You can seek some tricks they have provided in the video. After that, uh, for computer, like there is one pattern, like there is some flow. Okay, maths has a very high weightage in NIMSET examination. After that, coming to LR, then coming to computer, then coming to English. This is the type of flow you have to follow. You can check it out some Telegram channels also, because Telegram provide many of the DPTs and for famous coaching in free. So you can check it out any of the Telegram channels. Now for computer. One famous YouTube channel, One Stop MCA, is for computer. I am recommending you because it is a channel in which Aryan is also prepared for the computer for that channel also, and my friend Sachin is also prepared from that channel also. They both prepared well in computer in from this channel. So One Stop MCA has provided a playlist for all the computer type videos in that channel, so you can check it out for free. Now, coming to LR and reasoning quanta. So now this type of videos, you can check it out any channel from it. Like there are very basic concepts of LR quant. You just follow through or go through the book of any of the LR or quant book. In the first page, they have written all the formulas. You can check it out and you have understand all these things. If you are still weak, then you can check it out any YouTube channel. They have provided you tricks, and many of the questions they have solved, so you can build confidence from that. In English is like by chance because you don't know about many words in English. You just follow some PYQs for the English and observe the pattern. And one website coming in my mind is that indiabix.com. I think it is for LR quant and also it is for English also. So you can check it out in your free time after the covering maths, computer and LR. Then you can check it out English for that. Now, like एक कमेंट आया था कि भैया 50 डेज रह गए हैं, हम मतलब क्या करें लास्ट 50 डेज में, कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं उस रिगार्डिंग एक चीज बोलना चाहूंगा आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के रिगार्डिंग। लाइक आपको लास्ट का 1 मंथ डेडिकेटेड रहना है अपने मॉक टेस्ट के ऊपर। फुल एंड मॉक टेस्ट ही देने हैं। बिकॉज जब आप पूरे मॉक टेस्ट दोगे, फुल मॉक टेस्ट दोगे, तो आपका एक लेवल बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैंने जो निमसेट का एग्जामिनेशन दिया वैसे ही लेवल के मैं रोज एक एग्जामिनेशन 3 एग्जामिनेशन दो रोज की। लाइक रोज की 3 से 4 मॉक टेस्ट दो, जिससे कि आपकी हैबिट बन जाए और उसको एनालाइज भी करो। ये नहीं कि सिर्फ देना ही देना है। You have to analyze all the tests after the examination, then check the mistakes are there. How can I correct that mistake? You can check it out that GPT of that pattern you are mistaking. Okay, correct that mistake from applying those formulas which are in the mistake to other questions of that GPT. Okay. मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक के रिगार्डिंग जिस क्वेश्चन से भी मिस्टेक कर रहे हो, उस क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जर्व करो। उस पैटर्न के और भी क्वेश्चंस निकालो बुक में से या फिर आपकी डीपीटी जो आपके पास पड़ी है, उसके ऊपर उस पैटर्न के 4 5 10 15 क्वेश्चन और कर पाओ। आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो पैटर्न आपके माइंड में मैच हो जाएगा कि हाँ इसमें मैं गलती कर रहा हूँ, इसमें मेरे को ऐसे कर। ओके। सेकंड थिंग इज दैट लास्ट के 30 डेज का तो ये मॉक टेस्ट वाला हो गया, लेकिन जो बचे हुए 20 डेज या 10 डेज अब लेफ्ट है, तो उसमें क्या करना चाहिए। देखो अभी आपका जो 10 डेज लेफ्ट है उसमें मैं यही कहूंगा कि अपने वीक टॉपिक्स को भी मत छेड़ें, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया उसको। डोंट अप्लाई योर माइंड ऑन द वीक टॉपिक, डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लीज अप्लाई योर माइंड ऑन द टॉपिक्स यू हैव कवर्ड बट स्टिल मिस्टेकिंग। ओके, लाइक टॉपिक वाइज भी आपकी मॉक होते हैं, उन मॉक्स को लीजिए। लाइक 10 दिन है तो 10 दिन में ऐसे टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए जो थोड़े बहुत टफ हो, थोड़े बहुत एवरेज हो, थोड़े बहुत इजी। हर दिन उन टॉपिक्स के टॉपिक वाइज मॉक को लगाइए, तो आपका उससे क्या होगा कि पर टॉपिक पर कमांड पड़ जाएगा। जब टॉपिक पर कमांड आ जाएगी तो फुल लेंथ मॉक तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। लेकिन फुल लेंथ मॉक आपको रोज देना ही देना है, एनालिसिस भी करनी है और डिसिप्लिन के साथ रहना है। दीज आर द थिंग्स यू शुड फॉलो फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ
NIMSET examination 25 and now I am ending this video because जो भी मैंने आपको बताना था वो कवर हो चुका है। लेकिन देखो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा कि हर एक पर्सन का अलग अलग पेस होता है किसी भी चीज को कवर करने का, अलग अलग फोकस होता है। तो आपको अपनी पेस के हिसाब से ही अपना टाइम मैनेज करना है। लाइक यू डोंट गिव extra time to some easy topics and don't give extra time to hard topics also। और आप देख रहे हो अब पूरा सेटअप कहाँ पे शिफ्ट हो गया, लाइब्रेरी के अंदर। आई एम इन द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ NIT Trichy। यहाँ बोल नहीं सकते हैं तेज, लेकिन मैं एक कोने वाली सीट में जाकर बैठा हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं और प्लेसमेंट सीरीज फॉलो कर लो यार, बिकॉज उन वीडियोस में बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है आगे। तो उस वीडियोस को भी देखते रहना, आपको मोटिवेशन मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि NIT Trichy में किस तरह की प्लेसमेंट हो रही है और कहाँ कहाँ लोग प्लेस हो रहे हैं। मैं अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने लगा हूँ उसके अंदर, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, क्वालकॉम, IBM और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी विपरीत, टीशो, मैनी ऑफ द हाई पैकेज वाली प्लेसमेंट है ना, मैं सभी बताऊंगा आपको कैसे प्रिपेयर किया जाता है उससे। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। बिकॉज आप जितना सपोर्ट करोगे, आप जितना मुझे बताओगे डाउट्स क्या है कमेंट्स के थ्रू, तो मैं उतना आपको और समझ पाऊंगा और ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा।